Hello and welcome to this new tutorial. This is the part 2 of the democratic series and today we are going to talk about definitions of democracy. आप सबका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम definitions of democracy के बारे में जानेंगे. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. Various definitions given by various political philosophers and scholars regarding democracy. So let me take first. According to Greek philosophers Cleon, according to him, that shall be democratic which shall be of the people, by the people, and for the people. According to Greek philosopher Cleon, according to him, that everything shall be democratic, everything shall be of a democratic, provided it should be of the people, by the people, and for the people. What does it mean? Is very simple, that in a society, in a state, or in a country, anything which happens, any development, any policy formulation, any schemes which need to be introduced, or anything which happens as a functioning of the state, it must be of the people, it should be by the people, and it should be for the people. That means anything, whatever is happening, it should be for the welfare of the people. And if things are not for the welfare of the people, if things are not for the citizen of the state, then it cannot be a democratic setup. And therefore, according to Greek philosophers, he has very rightly summarized that anything which happens in a democratic state, it should be for the people, by the people, and of the people. जब हम डेमोक्रेसी और उसके डेफिनेशन को समझते हैं तो यहाँ पर एक ग्रीक फिलोसोफर क्लियोन करके हैं. उनका कहना ये है कि हर एक डेमोक्रेसी में जो भी कुछ होता है वो हमेशा लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए, और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए. अगर कोई भी पॉलिसी, कोई भी डिसीजन जो लिया गया है वो अगर लोगों को बेनिफिट नहीं करता है और वो लोगों के लिए नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है. सो डेमोक्रेसी रिवॉल्व्स अराउंड द पीपल, अराउंड द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड दैट इज व्हाट द ग्रीक फिलोसोफर क्लियोन हैज summarized in his definition understanding democracy, that shall be a democratic which shall be of the people, by the people, and for the people. Moving on to a next definition given by Lord Bryce, and according to him, the word democracy has been used ever since the time of Herodotus to denote that the form of government in which ruling power of the state is legally vested not in any particular class or a classes, but in the members of the community as a whole. Now, according to Bryce, he says that the word democracy, which has been used ever since, and according to him, this word has been used ever since the Herodotus. Now, who's the Herodotus? Herodotus was considered to be a father of history. Now, this is just an example to show that democracy is been used ever since the time of Herodotus, and during that particular time the power, the ruling power of the state was legally vested not in any particular class or classes, but directly to the members of the community as a whole. That means even during those days, the members of community, that is basically people, common people or citizens of that time, had more power to govern their state. And therefore, according to Bryce, the word democracy has been used ever since the time of Herodotus. And this clearly shows that even in historical context, even in history, we have some examples where the power was given to the members of that community, and the community would decide what they wish to have and what they wish not to have. And therefore we have a various example of ancient democracies. Example, Athens, Spartans, they had the system of democracy. They had a system of people's participation directly into the decision making process. And therefore, according to Bryce, the word democracy is a very historical word, and it has been used since the time of Herodotus.
दूसरा जो डेफिनेशन है गिवन बाय लॉर्ड ब्राइस, ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी शब्द है, जो डेमोक्रेसी एक वर्ड है, ये बहुत बहुत पुराना है और ये उस ज़माने से है जिस ज़माने में हेरोडोटस वॉज लिविंग। और हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उनको हिस्ट्री का फादर भी कहा गया है। और इससे ये पता लगता है कि हेरोडोटस के टाइम से या उस ज़माने से डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेसी एज अ वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। और उनके हिसाब से द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब उस टाइम पे था, जिस तरह का सरकार था, उस दौरान जो पावर था वो लीगली वॉज गिवन टू द कॉमन पीपल। मतलब उस ज़माने में जो पावर था स्टेट को रूल करने का, वो लोगों के पास था और ना कि कोई क्लास या क्लासेस के पास। इससे ये हमें पता लगता है कि उस ज़माने में लोगों को अधिकार दिए गए थे कि उनको कैसी सरकार चाहिए, उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और इसीलिए एग्जाम्पल्स भी बहुत हैं एंशियंट डेमोक्रेसी के, जैसे कि एथेंस है, स्पार्टन्स है, वहाँ पर एक तरह की डेमोक्रेसी थी। नाउ यू कैनॉट कंपेयर दैट डेमोक्रेसी विथ टुडेज डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली दैट इज़ एंशियंट डेमोक्रेसी। दे हैड सम ऑफ देयर ओन लिमिटेशन, और आज के तारीख में देखा तो हमारी डेमोक्रेसी बहुत डिफरेंट है। लेकिन वो डेमोक्रेसी थी, एक तरह की डेमोक्रेसी थी, वहाँ पर लोगों के खुद के अधिकार थे और लोगों को कुछ रियायत भी दी गई थी। और इससे ये पता लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो बहुत बहुत पुराना शब्द है, सिंस द हेरोडोटस टाइम, एंड दैट इज़ व्हाट rightly Lord Bryce have managed to explain us that the word democracy has been used ever since the time of Herodotus. So moving on to the third definition given by J.S. Mill, and according to him, democracy as that form of government in which the whole people or some numerous portion of them exercise the governing power through deputies periodically elected by themselves. Very simple. According to J.S. Mill, he says that democracy is that form of power where entire people cannot be a part of a governing structure. In fact, few or numerous portion of them governs the state, and these few people get their power by election. That means election would be conducted periodically, or election would be conducted, like example today we have every after 5 years we have election, and after 5 years election we elect some people, a group of people who represent the masses, who represent the largest section of the society, and on behalf of the largest section of the society these few people rule the state. And that is what J.S. Mill says, that democracy is that form of a government in which the whole people or some portion of them exercise this special governing power, and they have got this special governing power through periodically election process. जब हम तीसरा डेफिनेशन लेते हैं J.S. मिल साहब का, सो ये साहब बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग या कुछ लोग एक स्पेशल अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं सरकार चलाने के लिए या स्टेट को गवर्न करने के लिए। और ये जो लोग होते हैं जो सरकार चलाते हैं या स्टेट को चलाते हैं, उनका जो चयन होता है, उनका जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, वो एक सेटअप के अनुसार होता है। एंड दिस इलेक्शन इज़ बेसिकली, जैसे हमारे इंडिया में एवरी आफ्टर 5 years, हर 5 साल के बाद फ्रेश इलेक्शन होते हैं, और उस फ्रेश इलेक्शन से हम अपने नुमाइंदे या अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और ये नुमाइंदे, ये रिप्रेजेंटेटिव बाद में हमको रिप्रेजेंट करते हुए असेंबली में जाते हैं और हमारे इश्यूज़ को रेज करते हैं। वैसे ही J.S. मिल कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ दैट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट वे समटाइम होल पीपल और सम पोर्शन ऑफ द पीपल विल एक्सरसाइज दैट गवर्निंग पावर, और वो उनको पावर इलेक्शन के बाद मिलता है। सो इन शॉर्ट, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट वे ग्रुप ऑफ अ पीपल exercise the governing power, and this power is given to them after getting elected through the election process.
So that is what, according to J.S. Mill, the definition of democracy. Moving on, we have another simple definition given by Sir John Seeley. Now he says that democracy is a government in which everyone has a share. Very simple. He says that in democracy, whenever we have a government elected by the people, in that government, every individual, every citizen has his or her share into this, and that is very practical to look upon. Example, today's government, whether you have voted that government or that party into power or not, but it is your government. That government represents you, and therefore you have every right as a voter, as a citizen of the state, to either criticize it, appreciate it, and to contribute with your own opinion. And therefore, rightly Sir John Seeley have said that democracy is a government where everyone has their share. You might be a teacher, you might be a doctor, you might be a laborer, you might be an industrialist, you might be a worker, you might be even student. Everyone has their share into the making of the government, because end of the day we all are citizen. सर जॉन सेली का कहना ये है कि जो डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट है, उसमें हर एक इंसान का अपना शेयर होता है, और देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है, हमारे सोसाइटीज़ में बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है. वी हैव अ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, लेकिन अंत में उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर कोई पावर देता है तो वो सिटीज़न है, और जो सिटीज़न होता है वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है. उसका सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, उसका रहने का, खाने का, पीने का तरीका डिफरेंट रहता है. वो भले एक टीचर हो या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई लेबरर हो या कोई स्टूडेंट हो. जब भी इलेक्शन आता है तो हम अपना बहुत मूल्यवान वोट उनको देते हैं, और उसी वोटों से वो अपनी सरकार बनाते हैं, वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं, और बाद में वो सरकार बनने के बाद वो सरकार सबकी होती है. भले आपने उस पार्टी को अपना वोट दिया हो या नहीं दिया हो, अंत में वो आपकी सरकार है, और उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है that government has to be accountable to everybody of that particular society. And that is what rightly Sir John Seeley have said, democracy as a government in which everyone has a share. Moving on to the next definition given by Sir Stanford Cripps. According to him, democracy is a system of a government in which every adult citizen is equally free to express his views. Very true. Democracy is such a system because that system gives you space, freedom to raise your opinion, to raise your views, and even therefore even criticizing the system is very important. This is a special power you'll see only in a democratic system. You will never going to see these powers such as criticizing the system, criticizing the government of the day, anywhere in another part of the system. But only democracy gives you this power, especially to all those adult citizens. When we say adult citizens, we are basically talking about the one who is a voter. The one who is a voter above 18 years of age, considered to be an adult, he understand or she understand how the system works, and wherever there are loopholes, wherever there are shortcomings, it is a citizen's responsibility to raise their own views, to raise their own opinion, so that government understand and look into that issues of things which are affecting the citizens of the state. And therefore Sir Stanford Cripps has rightly categorized it, saying that democracy is a system of a government in which every adult citizen is equally free to express his view. सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हर एक एडल्ट सिटीज़न को कुछ अधिकार दिए गए हैं, और ये अधिकार है
जैसे कि टू एक्सप्रेस हीज और हर व्यूज़ और ओपिनियन। ये बहुत बहुत मायने रखता है कि लोगों के विचार क्या है सरकार के बारे में, लोगों के विचार क्या है उस इश्यूज़ के बारे में, और सरकार उन इश्यूज़ को या उनके प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देखती है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होता है वो एक तरफा सिस्टम नहीं हो सकता है। वहाँ पर गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। अगर कोई सरकार बनती है वो बनती है लोगों के कारण, क्योंकि लोग ही ऐसे हैं, सिटीज़न ही उनको अपना वोट देके पावर में लाते हैं, और एक बार पावर में आने के बाद गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू द इश्यूज़ ऑफ द पीपल। अगर कभी भी सरकार फेल कर जाती है लोगों को समझने में, लोगों के इश्यूज़ को हैंडल करने में, तो लोगों का अधिकार है कि उस सरकार को क्रिटिसाइज़ करे, और अगर सरकार कुछ अच्छी करती है तो उसको अप्रिशिएट करे। सो देयरफॉर ओपिनियन ऑफ द पीपल आर वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये जो व्यूज़ है, टू एक्सप्रेस योर व्यूज़, ये अधिकार आपको सिर्फ एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ही मिलता है। ये अधिकार आपको कम्युनिस्ट सेटअप में नहीं मिलेगा, ये आपको अधिकार मिलिट्री रूल में नहीं मिलेगा, और नॉट इवन you'll get this in dictatorial form of government. Only you'll find in democratic setup. And therefore, Sir Stanford Cripps has rightly categorized that democracy is a system of government in which every adult citizen is equally free to express his opinion or views. Moving on to the next definition given by Macpherson, he says that democracy is only an instrument of selection of government to rule or make law by different methods and taking political decision. Very true. Democracy is an instrument, and this is the instrument of selecting that government. We have to understand that in democracy, how do we select the government? We select the government through election, and this election is supposed to be free and fair, and we all know how sometime elections are being influenced. Let's keep that aside and let us talk to the basic that yes, it is supposed to be free and fair election. People will select the government, and once the government is been selected, once they are into the power, what they are supposed to do is to make rules, make laws with various methods, whatever methods are available in democracy, and take some political decisions which are very very important for the state, society and people. And that is what democracy, according to Macpherson, says, that democracy is the only instrument, it's only mechanism of selecting the government, putting the government into the power, and once they got into the power, democracy will help them to make rules, help them to make laws which are very very important by adopting various methods, that is debate, discussion, and end of the day they must take certain political decision for the welfare of the society and a state. मैकफरसन का कहना है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है कि उस व्यवस्था से हम अपना सरकार चुनते हैं, अपनी सरकार को बनाते हैं, और एक बार सरकार बनने के बाद सरकार का काम यही है कि वो कानून बनाए, व्यवस्था अपने जगह पे रखे, व्यवस्था को ठीक करे, और जब कानून बनाते हैं तो एक प्रिस्क्राइब जो मेथड्स लिखी हुई है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो फॉलो करें। जैसे कि कोई भी अगर रूल बनाना है तो उसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर डिबेट होना बहुत ज़रूरी है, उस डिबेट के दौरान बहुत से विचारों का आदान प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, लोग क्या सोचते हैं उस इशू के ऊपर उनके ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, और ये सब करने के बाद अंत में एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, सरकार बनाने की, कानून तैयार करने का, कानून के लिए जो मेथड्स है वो फॉलो करने का, और अंत में डिसीजन लेने का, ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ एक डेमोक्रेसी में होती है। और इसीलिए अकॉर्डिंग टू मैकफरसन ही सेज डेमोक्रेसी इज़ ओनली अ इंस्ट्रूमेंट, वो सिर्फ एक मैकेनिज्म है ऑफ सेलेक्टिंग द गवर्नमेंट एंड लेटर ऑन टू रूल एंड टू make laws by different methods and to take political decision. Moving on to the next
definition given by H.B. Mayo. According to him, a democratic political system is a one in which public policies are made on a majority basis by representatives subject to effective popular control at periodic election, which are conducted on the principle of political equality and under condition of political freedom. It's a little big definition, but I'll try to explain it in very simple words. That according to Mayo, he says that a democratic political system is a one in which public policies are made, which is very simple. That in any democratic political system, the main agenda of any democratic political system is to make public policies. Now, when we make public policies, how do you make public policy in democratic political system? We make it on majority basis. That means in a particular house, example, let's say in Lok Sabha or Rajya Sabha in Indian context, we have a discussion, we have a debate, and then we have very important something called voting on the house. So whatever the decision has to be taken, there has to be a voting, and voting always comes into majority. So if a majority people decide in a Lok Sabha that yes, we need this law, or yes, we need this policy for the people, then that decision would be applied across the state. Now, when we say that majority basis or majority basis by representative subject, or when we say that the majority makes a decision, now this majority basically represent representatives from all over the country. These are the representatives which have been elected by the people, and these representatives have been elected through election process, which is very, very important. And this election has been conducted on the principle of political equality. That means all the political parties, all the political leaders, all the political contestants are equal. That means every one of them have a right to contest election, and these elections are been carried out under the condition of political freedom. That means every political party, every political leader has a freedom to contest election. Once they get elected, they go to the house. Once they get into the house, they make rules and regulation, and this is how the democratic political system is carried out. According to H.B. Mayo, उनका कहना ये है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर पब्लिक पॉलिसीज़ बनते हैं, और ये पब्लिक पॉलिसी मेजॉरिटी डिसाइड करते हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम में वी हैव रूलिंग पार्टी एंड ओपोजिशन पार्टी. कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो रूलिंग पार्टी को हमेशा ओपोजिशन पार्टी का भी विचार लेना बहुत ज़रूरी है, उनका ओपिनियन लेना भी बहुत ज़रूरी है. और एक बार उनका ओपिनियन मिलने के बाद वहाँ पर वोटिंग होती है, और उस वोटिंग में मेजॉरिटी अगर सपोर्ट करती है कि ये कानून बनना चाहिए तो वो कानून बनेगा. और ये लोग जो है वो इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, और ये इलेक्शन एक प्रिंसिपल पे होता है, दैट इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी, और एक कंडीशन होता है, दैट इज़ पॉलिटिकल फ्रीडम. और कहने का मतलब ये है कि हर एक स्टेट में, हर एक सोसाइटी में, हर एक पॉलिटिकल लीडर को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक पॉलिटिकल फ्रीडम होता है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. वो अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं. इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद वो एज अ नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव हाउस में जाते हैं. हाउस में जाने के बाद वो लोगों के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाती है, और यही है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का, that every political party, every political leader, every political contestant get an equal opportunity to contest election, और हाउस में जाके पब्लिक पॉलिसी को तैयार करने के लिए अपना योगदान दे. And that is what, according to H.B. Mayo, when he defined the democracy as a whole. Moving on to the second last definition given by C.B. Macpherson. According to him, democracy is merely a mechanism for choosing and authorizing government, or in some other way getting laws and political decision made. Very simple, as we rightly talked about earlier.
According to Macpherson, he says that democracy is a mechanism. Yes, it is a mechanism where we choose our people and we give them authority to govern the state. And once they have the authority to govern the state, they also make some laws. They also make some political decision. Because once you are in a power, you have to make political decision. You have to get the show moving. You have to make sure that no matter what happened, society move forward. Functioning of the state becomes more smooth. And if you want to have a smooth functioning of the state and society and a government, what we need to make is a political decision. सीबी मैकपर्सन का कहना यह है कि डेमोक्रेसी एक मैकेनिज्म है जहाँ पे हम अपनी सरकार बनाते हैं. सरकार बनाने के बाद उसको अधिकार देते हैं कि वो कुछ कानून बनाए और पॉलिटिकल डिसीजन ले ले, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर सोसाइटी स्टेट को फंक्शन करना है सिस्टमेटिकली. अगर पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिए गए सही टाइम पर तो कभी कभी बहुत बड़ा झटका भी लगता है. इसीलिए अकॉर्डिंग टू सीबी मैकपर्सन, ही सेज डेमोक्रेसी इज merely a mechanism for choosing and authorizing the government and in some other way getting laws and political decision made. And the last very important definition of democracy is given by F.D. Roosevelt, and he says that democracy was not a mere matter of universal suffrage and unhampered expression of the popular will. It must be a positive and constructive force in the daily lives of the people and provide not merely for political but economic needs also. Yes, rightly Roosevelt has highlighted the most important issues with the democracy, that he says that democracy is not just having an election or having the right to just cast your vote, but it is more than that. It must be a positive and constructive force so that it helps every people in the democracy, every people of the state, and it should not just provide political needs but also gives them economic needs. Well, democracy is not just a phenomena of just contesting election, casting vote and some campaigning, but more than that, democracy should gives you a positive vibes. It should work as a constructive force for the daily needs of the people, for the daily lives of the people. Because in a society, especially where we have a large section of the people who live below the poverty line, they must be taken into consideration. Their lives have to be improved, and only democracy can provide that space, and therefore democracy can work as a force to provide people not merely the political needs but more than that economic needs also. And that is what Roosevelt have very rightly categorized in his definition. रूजवेल्ट का ये कहना है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक इलेक्शन के नज़रे से नहीं देखना चाहिए, या डेमोक्रेसी सिर्फ एक इलेक्शन का फंडा नहीं है जहाँ पर लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है, लोग अंत में जाके अपना मतदान करते हैं और सरकार बनती है. सिर्फ इस दायरे में ना होके डेमोक्रेसी एक पॉजिटिव स्पिरिट में दिखना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा फोर्स है जहाँ पर लोगों के लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है. और स्पेशली जैसे हमारे देश में we still have 30 to 40% of the population living below poverty line. डेमोक्रेसी ने उनके लिए क्या किया? क्या उनकी ज़िंदगी कुछ सुधर गई है? क्या उनका जीने का तरीका थोड़ा बदल गया है? क्या उनको जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है वो मुहैया होती है या नहीं? ये देखना बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए डेमोक्रेसी सिर्फ लोगों को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं देता है, बल्कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट को भी सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जब तक गरीब लोगों का रहने का तरीका ना बदल जाए, तब तक उनके लाइफ कुछ इजी ना हो पाए, तब तक डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है. अगर डेमोक्रेसी सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही
देखती है और सिर्फ उनके बारे में ही सोचती है, और जो बॉटम लाइन जो होती है सोसाइटी की, जो बॉटम लाइन होती है किसी देश की, अगर उनको निगलेक्ट करती है तो डेमोक्रेसी इज़ अ फेलियर स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर। सो इसीलिए रूजवेल्ट ने कहा है कि डेमोक्रेसी वॉज नॉट मेयरली अ मैटर ऑफ यूनिवर्सल सफरेज और unhampered expression of the popular will, but it should be used as a positive and constructive force in the daily lives of the people, so that it benefit people, so it benefit especially to those people who are living below the bottom line of the society। उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, और ये बदलाव ऐसे नहीं कि सिर्फ पेपर पे रहे, बट द चेंज हैज़ टू बी फेल्ट इन द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। तभी जाके डेमोक्रेसी में सबको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक पेपर के ऊपर रह जाएगी। सो दीज आर दी सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी गिवन बाय वेरियस स्कॉलर्स एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। सो आई होप यू हैव really understood the definitions of democracy. So see you soon in next tutorial. Till then, take care.